7th Maths, Chapter 9, Direct Proportion and Inverse Proportion, Practice Set 39. First question, Suresh and Ramesh together invested 1,44,000 rupees in the ratio 4:5 and bought a plot of land. After some years, they sold it at a profit of 20%. What is the profit each of them got? So here what they have asked, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सुरेश और रमेश इन दोनों ने मिलकर इतने रुपए इन्वेस्ट किए थे एक प्लॉट खरीदने में. दोनों ने इतना शेयर फिक्स किया था. दे हैव फिक्स दिस मच ऑफ शेयर. सो टोटल आफ्टर सेलिंग आफ्टर फ्यू ईयर्स हाउ मच प्रॉफिट दे हैव इनकर्ड एट द रेट ऑफ 20% के हिसाब से दोनों को कितना प्रॉफिट मिला ये देखना है. सो solution, investment is how much? 1,44,000 and profit they are getting 20%. So first let's calculate total profit. So total profit for both of them is equals to 20%. ओके इतने रुपए में 20% था तो उसी से 20% को कैलकुलेट करेंगे. सो टू कैलकुलेट 20%, 1,44,000 ये 20% हाउ वी राइट 20/100. किसी भी नंबर के बाजू में परसेंटेज मीन्स उस नंबर के नीचे 100. दिस सिंबल, ये जो सिंबल है इट इज़ इक्वल्स टू 100. So 20/100. Now cancellation. 20 cancel from bottom. So ऊपर से भी 20 जाएगा. Either you cut from here और यहाँ से एक यहाँ से एक, कोई भी 2 zeros कट कर सकते हो. Now after multiplication, now see at the end how many zeros are there? 1, 2. So first you write that 2 zeros and then you multiply. 2 4s are 8. 2 4s are 8. Then 2 1s are 2. So profit is rupees 28,800. But they have asked how much they both have got. So the profit is to be shared in the ratio 4/5. So ratio means ये डिवीजन हो रहा है, कॉमन मल्टीप्लिकेशन होता है. सो लेट कॉमन मल्टीपल बी x. सो therefore रेशो कितना हुआ? 4x is to 5x. अब ये दोनों प्रॉफिट हो गया. सो 4x प्लस 5x इज इक्वल्स टू ये जो टोटल प्रॉफिट है. सो 4 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9x. So 9x is equals to 28,800. So ये जो 9 है वो x के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है. So this 9 will come here in bottom. So when here is multiplication, so on the other side it will be division. So x is equals to 28,800. ये 9 यहाँ बॉटम में मल्टीप्लिकेशन. 9 1s are 9. 9 3s are 27. 1 carry. 28 में से 27 गया, 1 remaining, 1 carry. 9 2s are 18 and 0 0. So जो कॉमन मल्टीप्लिकेशन था that is this much. So how much both of them has received? Suresh equals to 4x
and Ramesh equals to 5x. So 4 into this common multiplication 3200, 5 into common multiplication. Four twos are 8, 4 threes are 12. See, 5 zeros are 0, 5 zeros are 0, 5 twos are 10, 1 carry. 5 threes are 15 plus 1, 16. So profit of Suresh this much, profit of Ramesh this much. Do not forget to mention rupees. Second question, Virat and Samrat together invested rupees 50,000 and 1,20,000 rupees to start a business. They suffered a loss of 20%. How much loss did each of them incur? So let's see how to solve these sums. If you see, they have not mentioned ratio. So we have to find out first ratio. So ratio of the investment is, यहाँ पे उन्होंने रेशियो मेंशन नहीं किया है, तो पहले हम लोग रेशियो ढूंढ के निकालेंगे कि विराट और सम्राट के बीच में कितने रेशियो में डील हुआ है, प्रॉफिट और लॉस जो भी. यहाँ पे उनको लॉस हुआ है तो वी हैव टू फाइंड आउट लॉस. सो 50,000 अपॉन 1,20,000. सो 1 2 3 4 1 2 3 4 4 and 4 0 cancel. So ratio हुआ 5/12. That is 5:12. Now their total investment, दोनों ने इन्वेस्ट कितना किया था, total investment is equal to 50,000 प्लस 1,20,000. सो जब हम इसको प्लस करेंगे सो इट विल बी 1,70,000. You can add in rough column and write. So this is the total investment. Now as we can see, they have suffered a loss and loss percentage 20%. So let's calculate loss 20%. So calculate loss equals to 20% means 20 upon 100 into 1,70,000. So 20 cancel. First count all the last zeros, 1 2 3. So 1 2 3. Then 2 sevens are 14. 1 carry, 2 ones are 2, 3. So here 34,000 is their loss. So how much loss each of them has suffered? So let the common multiples be x. So their ratio is 5x and 12x. So total loss for both of them, for both 5x plus 12x equals to 17x. So that is 17x is equals to this 34. So x is equals to, ये जो x है 17 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, so that multiplication this side will become division. So 17 ones are 17, 17 twos are 34 and this 30 will get carried over. So common loss is 2,000.
So for each of them, loss for each of them will be Virat and Samrat. So loss for Virat and loss for Samrat. Virat is 5x and Samrat is 12x. So 5 into 2000 and 12 into 2000. So 5 2s are 10, means 10,000, and 12 2s are 24. So 24. So this is the loss for both of them. Do not forget to write currency. Third question. Shweta, Piyush and Nachiket together invested rupees 80,000 and started a business of selling sheets and towels purchased from Solapur. Shweta's shares of the capital was 30,000 and Piyush 12,000 at the end of the year. They made a profit of 24%. What was Nachiket's investment and what was his share of profit? So let's see how to solve. Investment by Shweta is 30,000 and by Piyush is 12,000, and by Nachiket we don't know, so we'll take X. So total investment of all three of them is 80,000. So we have to find out Nachiket's investments. We will do addition. हम सभी को addition करेंगे. 30,000 plus 12,000 plus X is equals to 80,000. So 30 plus 12 is 42. 42,000 plus X is equals to 80,000. So this 42 will come toward this side. So जब यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आएगा, ये पॉजिटिव में है, सो इट विल बिकम नेगेटिव. ये नेगेटिव हो जाएगा. सो 80 minus 42 is 38. So this is X. That means Nachiket's share of investment is rupees 38,000. उन्होंने हमसे कहा है नचिकेत का इन्वेस्टमेंट ढूंढो और उसको प्रॉफिट कितना हुआ. हाउ मच प्रॉफिट नचिकेत हैज़ इनकर्ड. सो प्रॉफिट वॉज 24%. सो हम लोग डायरेक्टली वी विल फाइंड आउट प्रॉफिट ऑफ नचिकेत. सो 24% of profit on rupees 38,000. So therefore 24% means 24 upon 100 into 38,000. So 00 cancel. The last 0 you will take, and after you multiply this you will get 9,120. So the investment by Nachiket is rupees 38,000 and profit for Nachiket is rupees 9,120. So this is the answer. Fourth question. A and B shared a profit of rupees 24,500 in the proportion 3:7. Each of them give 2% of his share of profit to the Soldier Welfare Fund. What was the actual amount given to the fund
by each of them. So यहाँ पे क्या बोल रहे कि A और B दोनों इतना प्रॉफिट शेयर करते हैं, तो ये उनका प्रपोर्शन है बाय 2%. सो वो लोग एक सोल्जर वेलफेयर में 2% का शेयर डोनेट करते हैं. तो एक एक की तरफ से कितना डोनेशन जा रहा है वो वी हैव टू फाइंड आउट. सो द प्रॉफिट शेयर इन द रेशो, पहले तो कितने रेशो में वो लोग प्रॉफिट को शेयर करते हैं. 3:7. So let A get rupees 3x, then B gets rupees 7x. Total profit is rupees in 24,500. It has been given. So therefore 3x plus 7x is equals to ये प्रॉफिट है ना 3x plus 7x. सो ये टोटल प्रॉफिट के साथ कंपेयर होगा. सो दिस इज इक्वल्स टू 10x. ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आ जाएगा. सो यहाँ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में. सो व्हेन इट कम्स टूवर्ड राइट हैंड साइड इट बिकम्स डिवीजन. सो 0 and 0 get cancelled and remaining amount is 2,450. So therefore 3x profit of A. Profit of A is equal to 3x, that is 3 into 2,450 equals to 3 zeros are 0, 3 5s are 15, 1 carry, 3 4s are 12, 13, 1 carry, 3 2s are 6, 7, 7,350. And profit of B. Profit of B. So B का प्रॉफिट था 7x. So 7x is equals to 7 into 2,450. So 7 zeros are 0, 7 5s are 35, 3 carry, 7 4s are 28, 29, 30, 31, 3 carry, 7 2s are 14, 15, 16, 17. So profit of B is rupees 17,150. Now what we have to find out, 2% of share they are donating to soldiers. So 2% of A from his profit, अपने प्रॉफिट में से वो लोग दे रहे. सो प्रॉफिट उनका कितना था 7,350. तो therefore 2% into 7,350. सो जब हम डिवाइड करेंगे 0 and 0 कैंसिल, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 5 1s are 5. क्योंकि यहाँ लास्ट डिजिट 5 है तो वी कैन डिवाइड. 5 1s are 5, 5 1s are 5, 2 रिमेनिंग. 7 में से 5 गया, 2 बचा. 5 4s are 20, 23 में से 3 बचा. 5 7s are 35. सो ए ने डोनेट किया रुपीज़ 147 एंड बी का देखते हैं. 2% of B from his profit, that is 17,150. So 2 upon 100 into 17,150. Again 0 and 0 cancel, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 5 1s are 5, 5 3s are 15. 17 में से 15 गया, 2 बचा. 5 4s are 20.
again 2, 5 5s are 25. So B donated rupees 345. Fifth question. Jaya, Seema, Nikhil and Nilesh put in altogether rupees 3,60,000 to form a partnership with their investments being in the proportion. अच्छा चारों का proportion था 3:4:7:6. What was Jaya's actual share? फर्स्ट नेम जया का है तो जया का शेयर हुआ 3 एंड कॉमन मल्टीपल के साथ. इन द कैपिटल दे मेड अ प्रॉफिट ऑफ 12%. सबको 12% का प्रॉफिट हुआ. हाउ मच प्रॉफिट डिड निखिल मेड? सो इन चारों में से जया, सीमा, निखिल एंड नीलेश, व्हाट इज एक्चुअली जया का एक्चुअल कैपिटल और निखिल को कितना प्रॉफिट हुआ. सो लेट्स सी. Investment made by them is in ratio, is in proportion this much. In proportion is this much. So they have asked us about Jaya. So therefore Jaya's share or actually Jaya's share or investment will be 3 into x. एक common multiple होगा and same x will be common to all of them, Seema, Nikhil and Nilesh. So therefore also 4x, 7x and 6x of investment by किसका किसका हुआ? सीमा, निखिल and Nilesh. Now further, total investment was 3,60,000. So total investment was rupees 3,60,000. So 3x plus 4x plus 7x plus 6x equals to 3,60,000. इन्वेस्टमेंट तो इन चारों का मिला के है ना. सो इनके कॉमन मल्टीपल्स इन सबको ऐड करके दिस मच. सो 4 + 6 10, 7 + 3 10. So 10 + 10 20. So that is 20x is equals to 3,60,000. So therefore x is equals to 3,60,000 upon 20. 20 से डिवाइड करेंगे. 0 0 कैंसिल. 2 1s are 2. 2 18s are 36. See 2 1s are 2. 1 carry. 2 8s are 16. So therefore x is equals to rupees 18,000. सो जयाज, उन्होंने हमसे जयाज का पूछा ना, तो जयाज इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू 3x, दैट इज 3 into 18,000. कॉमन मल्टीपल 18 मिला ना. सो लास्ट 3 zeros you will write as it is. Then 3 8s are 24, 2 carry, 3 1s are 3 and 5. So Jaya's investment is rupees 54,000. And now they made a profit of 12%. 12% का प्रॉफिट हुआ पूरे 3,60,000 में. सो पहले प्रॉफिट निकालेंगे. प्रॉफिट इक्वल्स टू
12% on rupees 3,60,000. So after calculating we get zeros cancel. When you multiply this in rough column, you will get 43,200. जब आप 36 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे, so you will get this much. Now further, this is a profit. ये हमको मिला profit. So now we have to find out Nikhil. Nikhil's investment is rupees 7x out of total investment, that is 20x. ओके, यहाँ हमने किया था ना, ये टोटल सभी 4 फ्रेंड्स का 3 + 4 + 7 + x, ये चारों फ्रेंड का 20x था. इसमें से निखिल का सिर्फ 7 था, यानी सिर्फ 7th हिस्सा निखिल का था. सो दैट मीन्स निखिल का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए निखिल का इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ सभी के टोटल का इन्वेस्टमेंट इनटू जो प्रॉफिट अभी मिला है, दैट द प्रॉफिट विच वी जस्ट नाउ कैलकुलेटेड. सो x and x ऑलरेडी गया. नाउ 0 and 0 कैंसिल, 2 1s are 2, 2 1s are नहीं सॉरी 2 2s are 4, देन 2 1s are 2, 3 में से 2 गया, 1 बचा, 2 6s are 12 and this 0. So 7 zeros are 0, 7 6 are 42, 4 carry, 7 1s are 7 + 4 11, 1 carry, 7 2s are 14 + 1 15. So total profit Nikhil made is rupees 15,120.